Assalamualaikum students, I am your biochemistry teacher Aansa. Today's lecture is about our next topic of carbohydrate metabolism, that is synthesis of glycosides, lactose, glycoproteins and glycolipids. आज का लेक्चर भी मैंने बायोकेमिस्ट्री बाय लिपिन कॉट की बुक से ही प्रिपेयर किया, तो आप वहाँ बुक में देखें, ये टॉपिक्स बुक में हैं, वहाँ से भी पढ़ें और स्लाइड्स को भी देखें और अपनी नोट्स प्रिपेयर करें. Lactose is a disaccharide composed of glucose and galactose. The linkage between these two monosaccharide units is beta 1,4. The dietary source of lactose is milk and other dairy products. It is also produced by the mammary glands in humans and many other mammals. Synthesis of this sugar takes place in vivo in the compartment of cell, that is the endoplasmic reticulum, and the enzyme which is used for its synthesis is called lactose synthase. Lactose synthase is a protein composed of two units or two parts, A and B, protein A or protein B. Protein A is known as galactosyl transferase, and this part of the enzyme lactose synthase is found in number of body tissues, while the protein B or the alpha-lactalbumin part of the lactose synthase is found only in lactating mammary glands. When these two protein combines, they form lactose synthase. Protein B of this enzyme or the stimulation for the protein B synthesis takes place under the influence of a hormone known as prolactin. In this figure you can see both part of the lactose synthase, that is protein A and protein B, and the reaction which is catalyzed by this enzyme, that is a UTP galactose plus glucose to form lactose. The side product is UTP. Our next topic is the synthesis of glycosides, glycoproteins and glycolipids. Now what are glycosides and how their synthesis takes place? Glycosides are the compounds in which a carbohydrate residue is attached by an acetyl linkage at the anomeric carbon atom to an alcoholic residue called A glycone, which is non-carbohydrate. अब ग्लाइकोसाइड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट का होता है और एक कंपोनेंट उसका नॉन कार्बोहाइड्रेट का. अब नॉन कार्बोहाइड्रेट को ए ग्लाइकॉन भी कह रहे हैं, और जिस लिंकेज के थ्रू ये अटैचमेंट है वो होता है एसिटिल लिंकेज है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्डिंग है, और एनोमेरिक कार्बन पर वो लिंकेज होती है. अब ग्लाइकोसाइड्स में भी अल्फ़ा और बीटा. अब अल्फ़ा और बीटा ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं कि ये बेसिकली वो जो एनोमेरिक कार्बन है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन को शो कर रहा है. तो जब इसमें आइसोमराइजेशन होती है तो कुछ जो होती हैं वो अल्फ़ा फॉर्म्स होती हैं और कुछ बीटा फॉर्म्स बन जाती हैं.
तो उसी के अकॉर्डिंग फिर उसका ग्लाइकोसाइड्स का सिंथेसिस भी वैसे ही होगा, और इसी वजह से हम उसको अल्फा और बीटा ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं. ए ग्लाइकॉन वेरीज एंड में अटैच टू द शुगर. वो जो नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो शुगर के साथ अटैच हो सकता है थ्रू हाइड्रोक्सिल ग्रुप और थ्रू अमाइनो ग्रुप. अगर जो लिंकेज हाइड्रोक्सिल ग्रुप के थ्रू हो रही है, जो सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्सीजन का होगा, उसको ओ ग्लाइकोसाइड्स कहेंगे. और अगर ये लिंकेज अमाइनो ग्रुप के थ्रू हो रही है तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का होगा और उसे हम एन ग्लाइकोसाइड्स कहेंगे. ए ग्लाइकॉन में डिफरेंट उसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स जो हैं जो अटैच हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ, उनमें वो मिथाइल अल्कोहल हैं, स्टीरोल हैं, फिनोल हैं, और न्यूक्लिक एसिड बेसिस प्योरिन पिरिमिडीन्स हैं, प्रोटीन और लिपिड. ये पार्ट नॉन कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट के साथ अटैच हो सकते हैं. और इसमें प्रोटीन पार्ट है जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच हुआ है, तो जो कंपाउंड बनता है डेट इज कॉल्ड glycoprotein. And if that part is a lipid, तो वो जो कंपाउंड बनेगा that will be called glycolipid. Next topic is glycoproteins. Glycoproteins are those molecules that contain carbohydrates and protein. These may be of different types depending on their function. These may be present within the cell membranes, or they may be carrier proteins or transporters or immunoglobulins. In this figure you can see different functions of glycoproteins. In cell surface recognition, glycoproteins may be the hormones or viruses. In cell surface antigenicity, these glycoproteins may be a part of blood grouping. Next function is the extracellular matrix. Glycoproteins may be present in this also, while these are also present in mucins, where they perform its protective biological function. Whether they may be present in gastrointestinal tract or urogenital tract, they perform their function of lubrication. Now next is the synthesis of glycoproteins. Synthesis of glycoproteins takes place in free ribosomes, which are destined for the cytoplasm. ऐसी glycoproteins जिन्होंने cytoplasm में ही रहना है या सेल के अंदर ही उनका फंक्शन है, तो उनका सिंथेसिस फ्री जो राइबोसोम्स हैं विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, उन पे उनका सिंथेसिस होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और उनका फंक्शन भी वहीं होता है. सेकेंड टाइप की ऐसी होता है ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं, यानी कि वैसे राइबोसोम्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हैं और वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहे हैं. उन राइबोसोम्स में जिन प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है विच आर डिस्टाइंड फॉर द सेलुलर मेम्ब्रेन, या वो सेल मेम्ब्रेन पे जाना है जिन्होंने, या लाइसोसोम में जाना है, और टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम द सेल, या सेल से बाहर जाना है. अब डिफरेंट डेस्टिनेशन पे डिफरेंट टाइप्स की ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है. अगर जो सिंथेसिस फ्री राइबोसोम में हो रहा है विच आर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, तो फिर वो ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में रहेंगी. एंड इफ दिस सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन राइबोसोम्स में हो रहा है
विच आर अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके लिए डेस्टिनेशन है कि वो सेल मेम्ब्रेन पे जाएँ, लाइसोसोम पे भी जा सकते हैं या सेल से बाहर ट्रांसफर हो सकते हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सिंथेसिस का एक रूट है कि कैसे किस ऑर्गेनेली से वो की फॉर्मेशन होगी और वो फिर किस ऑर्गेनेली में जाके स्टोर होंगी और वहाँ से फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट होंगी। तो फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं और सेक्रेटरी वेसिकल के थ्रू फिर इस तरह हुआ उनकी ट्रांसपोर्ट करते। गोल्जी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम्स में जाएंगे या फिर ये सेल मेम्ब्रेन पे जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन से फिर ये बाहर इनकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। In this figure, you can see the synthesis of the glycoprotein takes place in the rough endoplasmic reticulum, and then through the secretory vesicles they will be transported to the Golgi complex, and then in these secretory vesicles they will be shifted from the Golgi complex to the lysosomes, or they may become the part of the cell membrane. They may be shifted toward outside of the cell in the extracellular space. In this slide, you can see different steps in the synthesis of the glycoprotein. In the first step, what is the carbohydrate component of the glycoprotein? And the carbohydrate component of the glycoprotein is a sugar nucleotide. Sugar nucleotide are only the carrier for the sugar units, which are to be added for the synthesis of the oligosaccharide chain. And those sugar units may include UDP glucose, galactose, N-acetyl glucosamine, N-acetyl galactosamine, CMP, GTP, mannose or fucose, etc. And the linkage of which is present between the protein and the oligosaccharide chain, that linkage is a glycoside. That is a glycosidic linkage, and that glycosidic linkage may be O-linked or N-linked, but you can call those linkages which is present between the formation of these two units. Glycoside transferase is the enzyme that is to be used for the transference of the monosaccharide unit to the growing oligosaccharide chain. In the O-linked synthesis, there is a carrier which is known as a dolicol, which is a lipid carrier, and that carries the oligosaccharide chain to the growing polypeptide chain. And in the next figure, you can see the synthesis of the N-linked glycosides. N-linked glycoproteins can be transported to the lysosomes after their synthesis in the Golgi bodies or in the endoplasmic reticulum. Now in this figure you can easily see the synthesis of N-linked glycoprotein, और different steps हैं और step wise इसकी formation भी देखी जा सकती है। तो starting from the synthesis on ribosomes, उसका जो protein part है ribosomes पर उसका synthesis हो रहा है from 5' to 3', और इसमें जो ग्रीन एक है रिबन से शो किया हुआ है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, और उसका अमाइनो ग्रुप एस्पेराजिन रेजिड्यू विच इज़ एन अमाइनो एसिड, उसका अमाइनो ग्रुप है जो कि दिखाया हुआ है क्योंकि उसने नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच होना है और वो एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंटर हो जाता है आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, और वो फिर वो अटैच हुआ है थ्रू डोलिकोल। डोलिकोल एक लिपिड मॉलिक्यूल, एक कैरियर है, उसके साथ अटैच होता है और उसके साथ फिर ओलिगोसैकेराइड चेन अटैच हो गई है, सेकेंड स्टेप। और थर्ड स्टेप पर ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम डोलिकोल टू एन एस्पेराजिन रेजिड्यू,
और ओलिगोसैकेराइड ट्रांसफ़र हो गया है पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, वो अटैच हो गया है। और जो फोर्थ स्टेप है फिर इसकी ट्रिमिंग, उसको शो किया हुआ कि ट्रिमिंग ऑफ द कार्बोहाइड्रेट चेन बिगिंस विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही है तो उसकी फॉर्मेशन को यहाँ पे देखा जा सकता है। अब वो कंप्लीट जो है ग्लाइकोप्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन चुकी है। अब वहाँ से वो ट्रांसफ़र हो रहा है और वो ट्रांसपोर्ट होके गोल्जी एपरेटस में आ जाता है। अब इन द गोल्जी एपरेटस फर्दर ट्रिमिंग एंड एडिशन ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स टेक्स प्लेस। उसमें मैनोज के यूनिट्स अटैच होते हैं, तो देयरफॉर दैट इज कॉल्ड हाई मैनोज ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि उसमें जो बेसिकली जो मोनोसैकेराइड यूनिट है जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, दैट इज़ मैनोज। अब कंप्लीट उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है गोल्जी एपरेटस में, और अब एरो से उसको शो किया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन, और जिसमें एस्पेराजिन रेजिड्यू है उसका अमाइनो ग्रुप जो है वो ओलिगोसैकेराइड के साथ उसकी अटैचमेंट को देखा जा सकता है। तो दिस इज़ द कंप्लीट synthesis of an end-linked glycoprotein. Now here in this figure you can see the mechanism for the transport of end-linked glycoprotein. Last slide में हमने उसकी synthesis और उसकी transportation उसको भी डिस्कस किया है। अब इसमें एक डिज़ीज़ डिस्कस किया हुआ है और उसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको देखा जा सकता है, और वो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म कैसे होती है ट्रांसपोर्ट वो भी बताया हुआ है। अब इसमें फास्फेट का एक मॉलिक्यूल है जो अपना एक रोल प्ले करता है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ इट्स डेस्टिनेशन विद इन द सेल। Starting from Golgi apparatus and after its formation in endoplasmic reticulum, it has to be shifted toward Golgi apparatus. Golgi apparatus से फिर ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू लाइसोसोम में शिफ्ट हो जाती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी apparatus में आती है। गोल्जी apparatus से इसकी फास्फोरिलेशन है, मैनोज रेजिड्यू की फास्फोरिलेशन होगी, और फिर वो एक रिसेप्टर है जिसके थ्रू उसकी रिकग्निशन है, उस फास्फेट मॉलिक्यूल की रिकग्निशन होगी, और वो फास्फेट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट वेसिकल में शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर इट्स रिकग्निशन फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट वेसिकल से फिर वो लाइसोसोम में शिफ्ट हो जाता है, फास्फेट मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। सो दिस इज द होल प्रोसीजर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ end-linked glycoprotein after its formation in endoplasmic reticulum। और यहाँ पे बॉक्स में आई सेल डिजीज़ को भी मेंशन किया हुआ है कि अगर ये इसके ट्रांसपोर्ट में किसी स्टेप पे अगर ब्लॉकेज है तो इसका जहाँ पे इसका सिंथेसिस हुआ था वहीं पे ही इसकी स्टोरेज हो जाएगी और ये फर्दर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी और वो एक डिजीज़ प्रोड्यूस कर देगी, दैट इज़ कॉल्ड आई सेल डिजीज़। तो उसमें सिम्टम्स भी इस बॉक्स में उसके मेंशन किए हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। In this slide, example of the glycoprotein is shown, and that glycoprotein which is present in the RBC membrane, that is called the glycophorin, and that glycoprotein contains 16 oligosaccharide chains, 15 are O-linked and 1 is end-linked. Sialic acid residue which is present at the end of the oligosaccharide chain determines whether the protein is old or new, or whether the RBC has been completed its 120 days lifespan or not. Ceruloplasmin is a copper transporting protein in the human body. It is another example of the glycoprotein. एक ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है, एक ट्रांसपोर्टर है जो कि कॉपर
जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है. And its degradation of this protein takes place in the hepatocytes. लिवर में इसकी डिग्रेडेशन होती है और लिवर में जो हेपेटोसाइट्स हैं उनकी मेम्ब्रेन्स में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं विच आर नोन एज ACLO ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स which are responsible for the degradation of this protein. Now the lysosomal degradation of glycoproteins. Glycoproteins जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो उनकी डिग्रेडेशन होती है लाइसोसोम्स में. लाइसोसोम्स में कुछ एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो इनके डिग्रेडेशन में हेल्प कर रहे हैं. तो ग्लाइकोप्रोटीन का सिंथेसिस जैसे हुआ था और जॉइन से उसके ऊपर कंपोनेंट्स अटैच होते गए थे और उसका कंप्लीट फॉर्मेशन हो गई थी. उसी तरह से उसका डिग्रेडेशन का प्रोसीजर भी होता है. तो स्टेप वाइज उसका रिवर्स ऑर्डर में उसकी रिमूवल होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, जिस तरह से अटैचमेंट हुई थी. रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कंपोनेंट वन बाय वन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी जैसे अटैच हुए थे अब वो उस तरह ही रिमूव हो जाएंगे. तो ग्लाइकोप्रोटीन की एक स्टोरेज डिजीज़ होती है कि अगर उसमें डिग्रेडेशन में कोई फॉल्ट है या कोई एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो उस तरह से फिर वो डिग्रेड नहीं होगी और वो स्टोर हो जाएगी. उसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइडोसिस. दैट इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ वन ऑफ द डिग्रेडेटिव एंजाइम. तो डिग्रेडेशन नहीं होगी और वो स्टोर हो जाएगी. उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन स्टोरेज डिजीज़. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे कंटेंट्स में है दैट इज़ ग्लाइकोलिपिड विच आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स. These are composed of two components, carbohydrate and lipids, and backbone in lipid structure in the glycolipid structure, and that is known as sphingosine and not the glycerol. Therefore, these are called glycosphingolipids. Almost all glycolipids, these are the ceramide derivatives. Ceramide is a basic structural component in all the glycosphingolipids. Just like glycoproteins, these glycosphingolipids are mostly present in the membranes of the cells and greatest amount present in the nerve tissues. They are antigenic in their nature. Antigenic means they are responsible for the recognition of certain types of toxins or certain types of components in the blood. Next is the structure of glycosphingolipids. Glycosphingolipids, these are different from sphingomyelin. Sphingomyelin में phosphate group present है और glycosphingolipids में phosphate group absent है. And this is the only difference between these two. While the ceramide moiety is present in both. Glycosphingolipids की जो क्लासिफिकेशन है उसमें न्यूट्रल होते हैं और एसिडिक होते हैं. न्यूट्रल जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हैं इनको सेरेब्रोसाइट्स भी कहते हैं. And those contain 1 to 6 sugar units in their structure and they are present in the outer face of the plasma membrane. And examples of those include cerebrosides and globocytes. While in the next category, which is the acidic glycosphingolipids, they contain or they have some sort of charge in their structures due to the presence of the charged component in them. And these glycosphingolipids are further divided as gangliosides or sulfatides. Gangliosides are most complex glycosphingolipids, while the sulfatides contain sulfate group in their structure. Just like glycoprotein synthesis
Glycosolipid synthesis also takes place in the Golgi bodies and endoplasmic reticulum. And the transference of the sugar units takes place with the help of sugar nucleotides, and their reaction catalyzed by the glycosyl transferase. Addition of the sulfate group in some glycolipids takes place by a sulfate carrier PABs, known as PABs 3-phosphoadenosine 5-phosphosulfate. Galactocerebrosidase 3-sulfate is a major sulfatide which is present in brain cells.